Hello everyone. So I will begin with the juvenile justice. The word juvenile has originated from the Latin word juvenilis, which means of or belonging to youth. Okay, so juvenile means belonging to youth, a young person. Juvenile justice is the area of criminal law applicable to persons who are not old, that is, mature enough to be held responsible for criminal acts. As I told you that in the last video, the example of Nirbhaya rape case in which one of the perpetrators was, one of the wrongdoer was a person below the age of 18 years, and so usko rehabilitation center bheja gaya tha because he was not treated as an adult male who could have done the crime. And since he was a minor, so he got the benefit of that age proof, and he was treated as a juvenile for the same purpose. But my opinion is that if he is having the capability of doing such act, then he or she may also or should also be held responsible for the liability or consequences that arise because of the wrongful act that he or she has committed. This is my personal opinion, not entering into any sort of controversies or so. A child is born on innocent, so that is the rule, that is the general rule or accepted also, that anybody और अ चाइल्ड यू सी कितने इनोसेंट होते हैं, है ना, उनको कुछ नहीं पता होता व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड ऑल अबाउट. सो वट एवर इज़ टॉट, दैट इज़ टॉट बाय द पेरेंट्स. एज वी से दैट मदर इज़ द फर्स्ट टीचर बिकॉज इट बिगिनस एट होम. बेसिक एजुकेशन थोड़ी बहुत वो मदर ही सिखाती है अपने बच्चे को, एंड देन ही इज़ एडमिटेड टू अ स्कूल. एंड व्हेन ही मीट्स सम स्ट्रेंजर्स जो कि उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं बाद में, तो वहाँ से थोड़ा बहुत उसको पता चलता है ओके द वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट दिस, द फेकनेस एंड एवरीथिंग, सो मैनी पीपल, सो मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट पीपल एंड different conditions in which they are living, right? So that all he gets to know when he meets those people. But at first when there is a newborn, उसको कुछ नहीं पता होता है, ठीक है, कोई चालाकियाँ नहीं, he is very innocent and an innocent smile that he always gives, right? Now whenever I say he, so please don't be that gender stereotyping कि he बोल रही है. I also mean she, so that gender is implicit in it. Okay, fine. The environmental factors that have stirred criminal tendencies in child should be held responsible. That, as I told you, when he meets some strangers or new people in the school or such place where you can see a lot of mass of people residing, then he gets to know that what are the circumstances or conditions in which they are living, what are the conditions of life there, and their standard of living, right, and their characteristics. So whatever is the environment or the people in that environment, he or they are inculcating that sort of characteristic or tendency, or they are creating a sort of mental change in the mind of that child कि उसने चोरी करी, अच्छा पकड़ा नहीं गया और उसको उस चीज़ का बेनिफिट हो गया, तो क्या होता है कि बंदे के दिमाग में ये आ सकता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ, मैं भी नहीं पकड़ा जाऊँगा और फिर मुझे भी इस चीज़ का wrongful gain हो जाएगा. आई विल बी गेनिंग दैट थिंग, एंड सिंस इट इज़ wrongful, सो वी से wrongful gain हो जाएगा, ठीक है. सो ऐसी चीज़ें, या जो, एंड इट इज़ अ क्राइम ऑल्सो, थेफ्ट इज़ अ क्राइम. सो क्रिमिनल टेंडेंसी आसपास के जो चीज़ें हो रही हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, कैसे वो लोग जी रहे हैं, उससे वो टेंडेंसीज आ जाती हैं दिमाग में. The removal of these factors might turn the juvenile into a person of stature and excellence. So when these factors they are eliminated from the mind of a person, तो फिर वो जो juvenile है, मतलब a child who is doing a wrongful act, but we are not able to punish him because of the age proof of below 18 years. Okay, तो अगर वो factors, वो tendencies, criminal mind अगर उस दिमाग से निकल गया, तो वो एक excellent person बन जाएगा और stature का मतलब एक अच्छा इंसान बन सकता है, right? So he is innocent. He can also become innocent later on when these criminal tendencies or environmental factors or people living there, उनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक या जो भी वर्किंग स्टाइल है, उससे वो
प्रभावित ना हो. So there is always said no, there is a bad company, there is a good company. And why parents or family say that you should be with a good company? Because their working, their living style, you may also get it because of the habitual nature और human tendencies of living together with them. आप में भी वो सारी आदतें आ जाती हैं, ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, और आपको वो सही लगने लगते हैं और अपनी फैमिली और पेरेंट्स गलत लगने लगते हैं, right? So because of the environment in which you are living or spending your maximum time, you get into those tendencies and you feel that it is right. चोरी तो है, पकड़ा नहीं गया और उसको पैसा भी मिल गया या कोई सामान अच्छा मिल गया, तो क्या गलत है इसमें, right? So these are the criminal tendencies. That's why it is said that bad company के साथ नहीं रहना चाहिए हमें, क्योंकि वो हमें कुछ गलत चीज़ें they can inculcate into our minds, and then which will be really difficult to eliminate at the first place. Eliminate हो जाना तो अच्छा है, but उसको eliminate करना is a bigger task. Okay, history. The primary legal framework of juvenile justice law was Juvenile Justice Act 1986 that provided protection, treatment, rehabilitation of children and delinquent means जो diverted है या जिनके पास ऐसा criminal mind है, delinquent juveniles, and for adjudication. Adjudication means to decide, okay, to determine the matters related to disposition of delinquent juveniles. जो juveniles रास्ता भटक गए हैं बेसिकली, उसको आप delinquent बोल सकते हो. तो उनका जो भी matters है, that suppose that निर्भया only, or they have committed a crime, they have committed a serious theft or dacoity with some more people, but again क्योंकि वो below the age of 18 years हैं, तो हम उनको punish नहीं कर पा रहे हैं. So we are treating them as a juvenile. So how will that be rehabilitated? Why we need to protect such juveniles when they have committed the crime, so that when they become a major person they can lead a better life. And जो भी वो criminal tendencies उनके दिमाग में इस समय थी, जिसके आफ्टर अफेक्ट में आकर उन्होंने वो क्रिमिनल एक्ट या रॉन्गफुल एक्ट किया, वो अभी के अभी ही रिमूव हो जाए, एंड इट मे नॉट इंक्रीज फर्दर इन देयर माइंड. दे मे नॉट कंसिडर दैट एक्ट टू बी करेक्ट एंड रिपीट द सेम इन फ्यूचर, बिकॉज आफ्टर मेजॉरिटी इफ दे रिपीट द एक्ट, then they will be treated as a major person, and then whatever serious consequences are as per the IPC or new criminal law enforced today, वो उन पर लगेगा और उसकी पनिशमेंट इससे ज़्यादा भी सीरियस होगी, और तब वो पनिशमेंट का डिक्रीज होना या कम होने का भी कोई चांसेस नहीं होगा. बिकॉज राइट नाउ what is happening is you are getting the benefit of a juvenile, but later on after gaining majority, if the same tendency is there in the mind, you will not be able to develop, you will not be able to contribute in the positive manner to the country, because youth is the future. और अगर किसी कंट्री का फ्यूचर ऐसे क्रिमिनल एक्ट ही करता रहे और उसकी कंट्री की प्रोडक्टिविटी या डेवलपमेंट में हेल्प ना कर सके, सो यू कैन कंसिडर द सिचुएशन और द predicament of the country, right? It will only and only become underdeveloped. Even if it is a developed country, it will become underdeveloped because of such juveniles or youth, right? So in that way the rehabilitation is important, and they have to be protected, and they have to be separated from such wrongdoers, yeah, from such people who have such sort of wrongful tendencies in their mind. So they have to be treated accordingly. उनका you can say psychological treatment होना ज़रूरी है, ताकि उनको बैठकर कोई समझाए harmful environment में that see you have done this thing and these are the consequences, now you should not repeat, or why you should not repeat. That also has to be explained to children, especially to the present generation, because if I say you don't have to do this, they're always like why can't we do this? So ये जो एक अलग inquisitiveness आ गया है आजकल की generation में, that is harmful also to a greater extent, because if you try to make them understand something good, they will always go on to a different negative tangent. Anyways, not going much into that, but I'm only trying to explain you that why these terms protection, treatment, rehabilitation of such delinquent persons are required, so that after gaining majority or after getting out of that rehabilitation center where they are treated for what, so that they can become a better citizen or they can develop into a better person, so that those criminal tendencies or wrongful mind can be eliminated from their mental condition.
Okay, and when they are released from that rehabilitation center or prison, they contribute to the wellness of the society and to the development of the country in a positive manner, and not engage themselves again in such crimes. And they could become a better citizen of the country when they are released. And see, what is the purpose of keeping the criminals into the prisons? So that they are separated from the society as a whole for some time. That may be a deterrence on their part also. They get the punishment for what they have done, and also the society is protected, because if the criminal is set free to move into the society, तो क्या होगा? आज एक का मर्डर किया है, कल जाकर किसी और का मर्डर करेगा, बिकॉज उसको कोई सज़ा नहीं मिली उस चीज़ की, उस रॉन्गफुल एक्ट की, राइट? सो इट इज़ अनसेफ फॉर द सोसाइटी ऑल्सो कि ऐसे क्रिमिनल्स फ्रीली मूव करें विदाउट एनी पनिशमेंट. So similarly, when these delinquent juveniles are also kept, और दे आर ऑल्सो प्लेस्ड इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, जिसको मैंने बाल सुधार गृह बोला था, तो उसका पर्पस भी ये है कि जब वो यहाँ से निकल के जाए और सोसाइटी में एंटर करें, तब वो एक बेटर सिटीज़न बने, जो कि सेफ़र होगा सोसाइटी के लिए, और किसी पॉजिटिव आस्पेक्ट में, किसी फील्ड में काम करके, वैसा ही काम करके जो कि बाकी उनके काउंटर पार्ट्स या यूथ कर रहा है, डेवलप कंट्री के लिए हेल्प करें. ठीक है? So that is the purpose. General Assembly of UN adopted a Convention on Rights of Child in 1989. This seeks to protect the best interest of juvenile offenders. So juvenile means youth offenders who have done or committed any offense. And every country has a different criminal regime. So the offense which is in India may not be an offense in some other country, right? The convention states that to protect social reintegration means when they are integrated back into the society. That is re plus integration. As I have told you, that after setting free from the rehabilitation centers or prisons, wherever they are kept for a certain period of time, when they are set free and they have to enter back into the society from where they came, या जहाँ पर उन्होंने वो crime किया था, right? So they should be protected, and that integration should be a safer one for the society as well. ठीक है? कि अभी तक उसके दिमाग में तो वही क्रिमिनल टेंडेंसी है कि मैं बाहर जाके फिर किसी का मर्डर करूँगा, राइट? सो इट विल नॉट बी द सेफर इंटीग्रेशन, isn't it? There shall be no judicial proceedings and court trials against them. दैट मीन्स जैसा कि एक अडल्ट मेल के साथ होता, वैसा जुडिशल ट्रायल या पनिशमेंट प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट नहीं किया जाता है. ठीक है? एंड दैट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड, दैट हैज़ टू बी ensured. Convention led the Indian legislation to repeal the Juvenile Justice Act. Now see, this act came in 1986 and this convention came later. When India ratified it, now the Indian laws have to be adopted according to the convention to which it has ratified, and to implement it in its own nation. किसी लॉ को बनाकर, किसी नए लॉ को बनाकर या एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड करना होता है, तभी वो चीज़ यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पाएगी जो इंटरनेशनली बोली गई है. ये मैंने किसी लास्ट वीडियो में बताया था. आई एम फेंटली रिमेंबरिंग दैट. सो इंडियन लेजिस्लेचर रीअपील्ड द 1986 एक्ट एंड मेड अ न्यू लॉ which was the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000. फाइन. सो ऐसा नहीं है कि जैसे ही 1989 में कन्वेंशन आया तुरंत इंडिया ने उसको साइन कर दिया और तुरंत उसने लॉ बना दिया यहाँ पर. ऐसा नहीं है. देयर इज सम टाइम रिक्वायर्ड, सब कुछ तो पैसेज ऑफ टाइम होता ही है. आफ्टर सम टाइम इट मे हैव साइंड, आफ्टर सम टाइम इट मे हैव डिसाइडेड दैट ओके वी नीड टू मेक अमेंडमेंट्स इन आर एग्जिस्टिंग लॉ. और कैसे करें? बहुत मेजर अमेंडमेंट्स है, हर सेक्शन में ही अमेंडमेंट करना पड़ेगा. तो इससे बेहतर है कि हमें इसको हटाकर एक नया ही लॉ ले आएँ. सो दैट्स वाई 1989 से वो 2000 बन गया. 2000 तक की बात आई. दैट होल 10 years स्पैन, अराउंड 10 years to make that new law and for it to come into force. Okay, now this 2000 Act also was amended twice, first in 2006 and then in 2011. Amendments were made to address the gap and loopholes in the implementation. So amendments क्यों बनाए जाते हैं? जब पहले आपसे कोई चीज़ छूट गई हो, whenever you write your answer, you revise it and what you find in your revision कि अच्छा मैंने ये वर्ड छूट गया था लिखना, या ये सेंटेंस गलत लिखा है, तो आप उसको कट करके दोबारा लिखते हो. So that is your amendment that you have made into your answer. That is your loopholes or gap
that you have recognized, which you have filled. So whatever are the gaps and loopholes in the provisions of law, or when you have implemented that law, तो आपको पता चला कि ये कमी है इसमें, हमें ये लॉ ऐसा लिखना चाहिए था, तो इम्प्लीमेंटेशन और आसान और अच्छे से हो सकता था. So for that amendments are made to any law for that matter. ओके. सो लूप होल्स, जैसे कि मैंने बोला कि एक थ्योरी के बाद दूसरी थ्योरी भी इसीलिए आती है क्योंकि पहली वाली में कोई लूप होल्स थे, राइट. व्हेन दैट मैरिज थ्योरी वी वर डूइंग डाइवोर्स थ्योरी. The increasing number of cases of juvenile crimes in recent years and frightful incident of Delhi gang rape case Mukesh versus State of NCT of Delhi triggered major changes in criminal justice system of India. As I told you, if he has the mental capability to understand that what act, what wrongful act or what heinous crime of criminal gang rape he is doing, then usko consequences follow bhi karwane chahiye, right. So such cases have, you can say, shaken the conscience of the people, and it triggered the criminal justice that no, it is not right whatever juvenile we are doing, and because of the present law we have to treat him as a juvenile and keep it in rehabilitation center, and then he will be set free, no punishment, nothing whatsoever. So that is wrong, right. It triggered, and it, you very well know that 2012 case had actually shaken and shocked everybody, right. Juvenile Justice Care and Protection Children Act 2000 was repealed, was replaced by the Juvenile Justice Care and Protection Act 2015. So again after 2012 heinous crime 2015 में इस act को लाया गया. 2015 act is the primary legal framework. Now this is the present law. So now this is the primary framework for juvenile justice in India. It has brought within its ambit children in need of care and protection and children in conflict with law. So these two expressions, these are brought within the ambit, that children who need the care and protection. That means they have some criminal tendencies in their mind, but with the care or protection or support, the emotional support or the psychological support if he is provided, then वो क्रिमिनल टेंडेंसीज उसके दिमाग में से रिमूव हो सकती हैं, ठीक है. देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर देम एट प्रेजेंट. सो इफ़ वी प्रोवाइड और अपॉइंट सम पर्सन हु मे टेक केयर ऑफ देम, तो शायद उनकी सिचुएशन ठीक हो जाए, राइट. So a child in need of care and protection means a child who is found without any home and ostensible means of subsistence, means he's not having any means to survive, he's not having financial condition or 2 square meals a day, that's why he was forced maybe to do some theft, okay, and he's not having any shelter to protect himself from the outsiders or from the outside environment, the rains, the hot summers, winters, and everything. He's not having any home. So he may be a child who needs the protection from external environments, and since he was not having any means of subsistence, so he may also need care of his facilities or basic amenities of life. It includes a child mentally or physically challenged or suffering from incurable disease with no one to look after him. So he may be, ना किसको केयर की ज़रूरत हो सकती है, जिसको कोई डिसीज़ हो या जिसके पास कोई देखने वाला ना हो, क्योंकि अगर वो होता, इफ़ देयर इज़ समबडी टू लुक आफ्टर हिम, देन ही मे नॉट बी अंडर द नीड ऑफ केयर, राइट, बिकॉज वो देख रहा होता उसको. बट if I am saying that he is in need of care, that means there is no one to look after him, or he may be having some sort of you can say disability physically or mentally, and he needs your protection because he's not able to understand what is good or bad because of the mental condition with which he is suffering, or because of the physically challenged thing he's not able to move, so he need your protection for that matter, right, or some disease because of which he's not able to arrange for himself the basic means of subsistence. Fine. It embraces children who are likely to be abused, tortured, or exploited for the purpose of sex or illegal acts. It includes children having parents who are unfit to exercise control over them. That means parents are unfit to control the children, तो उनको भी हम कह सकते हैं that since parents are not able to control or take care of them, so those children are also in the need of care and protection. Also children who do not have parents, अब है ही नहीं parents, and no one
अदर इन द फैमिली इज़ विलिंग टू टेक केयर ऑफ देम, बिकॉज पेरेंट्स जैसा तो कोई भी नहीं कर सकता। और अगर पेरेंट्स नहीं है तो होता है कि अरे हम क्यों देखें इनको, हमारे पास अपने बच्चे कम है क्या जो हम इनके भी देखें बैठे। और पैसा तो हर चीज़ में लगता है, तो अगर आप किसी और के बच्चे को पाल रहे हो आज के ज़माने में, तो वो कितना पैसा आप उसमें लगाओगे, राइट। सो इन सच सिचुएशंस पीपल में रेफ्यूज़ कि नहीं हम अपने वालों को ही पालेंगे, हम किसी और को नहीं पालेंगे। या अगर कोई किसी और के बच्चे को पाल भी रहा है बट उसके साथ भी वो टॉर्चर कर रहा है, उसी से सारे घर के काम करवा रहा है, इन lieu of that I am providing you 2 square meals a day, now you have to do all the works of my house. So what is this? Children who are likely to get tortured. Okay, that is thing, and they may be vulnerable. Okay, so no one is willing to take care of them, includes a child who is found vulnerable, likely to be inducted into drug abuse or trafficking or for unconscionable gains. मतलब कि कुछ ऐसा benefit, जैसे there was some I think a movie or something, सावधान इंडिया ऐसा कुछ में था, that कोई गैंग होती है जो बच्चों को किडनैप करती है, उनके हाथ पैर या कुछ काटेंगे, एंड देन दे विल लीव दोज चिल्ड्रन टू गो इन टू द रोड्स और ट्रैफिक स्टेशंस, दैट आप जाकर वहाँ पर भीख मांगो, to ask people from anybody who comes across कि give some money, give some article I have not eaten, and all those gestures which those beggars do, right. So that is known as a sort of unconscionable gains. विक्टिम ऑफ एनी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कोई आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके पेरेंट्स मर गए, नाउ देयर इज़ नो वन टू टेक केयर ऑफ हिम। सिविल कॉन्डेमेशन और नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी में भी ये हो सकता है, राइट। अ चाइल्ड हु इज़ फाउंड बेगिंग, एज आई टोल्ड यू, लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स और अ वर्किंग चाइल्ड हैज़ ऑल्सो बी इंक्लूडेड। सो कोई भी चाइल्ड जो आपको ऑन द फेस ऑफ इट, दीज आर ऑल व्हाट बेसिक एग्जाम्पल्स, जिससे ऑन द फेस ऑफ इट आपको लग सकता है दैट हाँ दे नीड द केयर एंड प्रोटेक्शन, बिकॉज देयर इज़ नो वन अदर, चाइल्ड हिमसेल्फ कैन नॉट अरेंज थिंग्स फॉर हिम, राइट। तो उसको कोई चाहिए है, बिकॉज ही इज़ सो इनोसेंट एंड सो in a tender age that he may not himself arrange for those amenities, he may not have knowledge of all the things and all the requirements that is needed for a better life. तो वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। तो अगर पेरेंट्स नहीं हैं या उनको कोई और देखने वाला नहीं है बिकॉज ऑफ अ नेचुरल कैलामिटी या any such thing कि उनके they have lost their parents, so what then, who will take care? So वहाँ पर फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और फिर इसलिए जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन में ऐसे चिल्ड्रन को भी उस कैटेगरी में लाया गया है, ठीक है। सो दैट मे बी द पॉजिटिव एस्पेक्ट, इन सब में कोई क्रिमिनल माइंड नहीं होगा, राइट। सो दैट वेज मेरा उस हिसाब से पॉजिटिव एस्पेक्ट कहने का मतलब है, बिकॉज सच पीपल आर एक्चुअली इन नीड ऑफ केयर। यहाँ पर कोई क्रिमिनल माइंड जैसा आपको नहीं दिख रहा होगा। नाउ दिस कम्स चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मीन्स अ जुवेनाइल who is alleged to committed an offense. So this may be a negative thing कि इनको हमें ट्रीटमेंट क्यों देना है, क्योंकि इनके दिमाग से हमें क्रिमिनल टेंडेंसी निकालनी है। इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, वाई? बिकॉज दे मे हैव डन समथिंग विच रन्स कॉन्ट्ररी टू लॉ, एंड क्राइम क्या होता है? एन एक्ट विच इज़ रॉन्गफुल और विच इज़ डन कॉन्ट्ररी टू लॉ, वही तो होता है क्राइम, दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। हमने लॉ में बोला दैट यू शुड नॉट डू थेफ्ट and you are doing theft, that means you are running in conflict with law. So that's why a child in conflict with law means someone who has committed an offense. Alleged means उस पर allegation लगा है, उस पर हमें शक है, it is doubted that he or she has committed this offense. And when will that doubt get cleared? जब उसके खिलाफ ट्रायल में proceedings होंगी और एविडेंसेस और प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स लाए जाएंगे, एंड ऑल द सर्कमस्टांसेस को देखकर जज डिसाइड करेगा कि हाँ इसने ये क्राइम किया था या नहीं किया था, तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जो ये एलिगेशन है वो प्रूफ में बदल जाएगी एंड ही वुड बी कमिटेड। यही तो होता है नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। एंड हैज़ नॉट completed 18th year of age as on the date of commission of offense. तो जुवेनाइल the age proof is considered to be on the date when the crime was committed, कि उस समय वो कितने साल का था, ठीक। This act provides for proper care, protection, treatment to juveniles by catering to their developmental needs, and adopted a child-friendly approach in adjudication, disposition of matters. Disposition means to dispose of, to end, and to
complete the matters. Adjudication is to decide and give the decision in the best interest of children. If it is a child friendly approach, that means it would be keeping in mind that what are the basic needs, or how tender they may be, how innocent they may be, and you also have to keep the innocence of the children in your mind कि हमें उस innocence को preserve करना है. इसीलिए हम उनको जुवेनाइल की तरह ट्रीट कर रहे हैं और एडल्ट की तरह ट्रीट ना करते हुए हम उनको वैसी पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज़ द पर्पस. इट एम्स एट अल्टीमेट रिहैबिलिटेशन. द अल्टीमेट पर्पस इज कि हम रिहैबिलिटेट करें. नाउ हेयर द वर्ड रिहैबिलिटेशन इज कमिंग एंड नॉट डेड ट्रेंड्स, बिकॉज एज आई टोल्ड यू वो इनोसेंस को अलाइव रखना है और हमें उनको कोई पनिशमेंट नहीं देनी to set an example, but we only have to eliminate those criminal tendencies from their mind, so that क्योंकि वो है तो 18 ईयर्स का बच्चा ही ना, अल्टीमेटली वो 18 ईयर्स का बच्चा होगा और उसे छोड़ दिया जाएगा. ठीक है, तो जब वो मेजॉरिटी बन के छूटा जाए फ्रॉम दैट सेंटर एंड ही इज़ री इंटीग्रेटेड इन टू द सोसाइटी, तब वो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे और अपनी लाइफ वैसे ही जिए जैसे कि बाकी यूथ जी रहा है. सो दैट इज़ द पर्पस. ओके, it has tried to lay down a uniform framework for juvenile justice in India. The Supreme Court in Sheila Burse versus Secretary Children Aid Society held that children should not be made to stay in observation homes for too long, and as long as they are there, they should be kept occupied. Means as we say, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. So कुछ ना कुछ काम में उनको ऑक्यूपाई रखो, बट ऐसा काम नहीं which is difficult for them to perform as per the age or their physical and mental development. But कुछ ना कुछ में something or the other lighter things, they should be kept occupied, and for not long duration, but they should be set free after certain year or months. They should be set free and reintegrated into the society. The occupations should be congenial and intended to bring about self-confidence, adaptability in life, development of human values. Okay, so such human values should be developed so that they may have the self confidence to work later on. क्योंकि क्या होता है, अगर आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर या ऑब्जर्वेशन होम में रखा जा रहा है, दैट मीन्स यू विल बी ऑब्जर्व्ड, योर कंडक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड, राइट. सो यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. आपको एक सॉर्ट ऑफ जेल तो पता ही होता है कि हाँ हमने गलत काम किया है तभी हमको पकड़ा गया है, तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. सो to develop the confidence, to develop human values so that those criminal tendencies can be eliminated and they be a better person. इसलिए moral values की education school में दी जाती हैं as a subject. Sanjay Suri versus Delhi administration. A news report described ill treatment meted out to minors in Tihar jail in Delhi, inconvenience with the jail staff. Means by the jail staff there was some ill treatment which was done to the minors. Writers of this report moved Supreme Court seeking relief on behalf of child prisoners. So that may be a public interest litigation, that the person himself was not having any interest, his own interest involved, but on behalf of the child prisoners, because they cannot sue for the ill treatment being done or for the bad condition in which they are living in that jail. So on behalf of them, this person moved, or the writers of report moved to the Supreme Court. The court appointed district judge to make an inquiry and give report. So the judge would make an inquiry that whether this complaint which is made in the report is correct or not, and then prepare his own report that has to be submitted and given to the court. His report disclosed that adult prisoners subjected children to sexual assault. So what was the ill treatment? That the adult prisoners, they were, again, now see why चिल्ड्रन शुड बी केप्ट इन ऑब्जर्वेशन होम, ताकि वो इन एडल्ट प्रिजनर्स से भी सेपरेटेड हो. अगर उनको तिहाड़ जेल जैसे में रखा जाएगा जहाँ पे बाकी सारे ग्रेव ऑफेंसेस करने वाले अडल्ट प्रिजनर्स भी होंगे, तो जो क्रिमिनल टेंडेंसीज हमें दिमाग से निकालनी थी वो तो कभी नहीं निकल पाएगी ना, रादर वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, राइट. तो यहाँ पर हो रहा था सेक्शुअल असॉल्ट विद द माइनर चिल्ड्रन. They feared that if their names were disclosed, they would be victimized. Means again उन पर कुछ क्राइम किया जाएगा. Victimized का मतलब ये नहीं है कि उनको victim कार्ड खेलकर न्यूज़ चैनल में दिखाया जाएगा, but they would again be the victims of further graver attacks by the adult prisoners. So they were not ready for their names to be disclosed, but they said कि हाँ होता है हमारे साथ ill treatment.
The court passed several orders. Some juvenile under trial prisoners were ordered to be released immediately. Under trial means जिनके trial proceedings अभी भी चल रहे थे, decision नहीं आया था. The matter was pending in the court. Okay, so some were ordered to be released immediately. Some convicted minors means decision had come and they were held to be convicted. That means it was proved that they have only committed the wrongful act. So now you see the change from the word alleged to convicted. Convicted मतलब decision उनके against आ गया था and it was proved that they have only committed that act. Okay, were freed on parole. That means parole means for some time they are freed. उनको कुछ टाइम के लिए उस जेल से निकाल दिया गया. बट ये जो एक मंथ के लिए उनको बाहर निकाला, दैट डज नॉट मीन दैट ये 1 मंथ उनके जो सेंटेंस दी गई होगी उससे कम हो जाएगा. फॉर सपोज व्हाट आई मीन टू से इज, इफ़ सिंस ही इज़ अ कन्विक्टेड माइनर तो कुछ ना कुछ उसको सेंटेंस तो दिया गया होगा. फॉर सपोज उसको 1 ईयर का सेंटेंस दिया गया, दैट फॉर 1 ईयर ही हैज़ टू live in the jail so that his sentence is completed. Okay, now if he is released for 1 month on parole तो होता क्या है कि that 1 month will again be added. ठीक है, so basically this 1 month will not be reduced कि कंटिन्यूस 1 ईयर के लिए रहना था, बट 1 मंथ के लिए उसको यहाँ से निकाला गया. तो अब इस 1 मंथ को इंक्लूड कर लीजिए. दिस 1 मंथ फॉर विच ही सेट फ्री इन टू द सोसाइटी दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन दिस 1 ईयर. ओके, बस इतनी सी बात है, इसको भूल जाओ. इट मे कन्फ्यूज यू बट यू शुड रिमेंबर दैट पेरोल मीन्स दैट दिस 1 month or for whatever duration the person is set free into the society that will not be included in the calculated duration of his sentence. ठीक है, वो 1 month चाहे वो बाहर बिताए बट तब भी उसको फिर 1 महीना और जेल में रहना पड़ेगा. क्योंकि सपोज अगर 1 ईयर हिसाब से था दैट अक्टूबर 2024 till October 2025, but in between for 1 month, for suppose May 2025, he was set free on parole. So now this 1 month ये अक्टूबर 2025 तक जाना था, बट अब क्योंकि ये 1 मंथ इसने बाहर स्पेंड किया तो ये 1 मंथ इसके 1 ईयर में से माइनस नहीं किया जाएगा. ठीक है, इवन इफ इट वॉज कंटिन्यूस बट उसको 1 साल बिताना है ना, तो फिर अब हमें अगर अक्टूबर 2025 तक जाए तो उसने सिर्फ 11 मंथ्स बिताए होंगे इन जेल. उसको 1 साल इन जेल बिताना है. ओके, आउट ऑफ विच 1 मंथ वॉज स्पेंट आउटसाइड जेल. तो अब ये 12 करने के लिए उसको नवंबर 2025 तक जेल में रहना पड़ेगा. ठीक है, सो दैट इज़ द बेसिस ऑफ परोल. ज़रूरत नहीं थी बट थोड़ा वर्ड समझाने के लिए मैंने बता दिया. नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, forget about it. The judgment stressed the need to generate a sense of humanism in jail administration. क्योंकि when they would have complained to the jail authorities about the same attacks or sexual assault, तो हो सकता है कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया या उनको ही डांट के बैठा दिया हो. राइट, बिकॉज क्या होता है ना, अडल्ट प्रिजनर्स जो होते हैं उनका एक अपना नेतागिरी सॉर्ट ऑफ लीडरशिप हो जाती है जेल में. ठीक है, सो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मे बी जेल अथॉरिटीज़ हैव नॉट लिसन टू द कंप्लेंट्स अगेंस्ट देम और नॉट टेकिंग एनी एक्शन. सो दैट्स वाई ह्यूमनिज्म वॉज सेट टू बी प्रमोटेड बिकॉज इवन इफ दे हैव कमिटेड द क्राइम्स बट at the end of the day they are also humans, and by the virtue of them being humans they should also have some basic human rights, right? Okay, salient features of 2015 Act. The Juvenile Justice Act divided crimes into 3 different categories. Petty offences means very trivial, ठीक है, जो ज़्यादा बहुत सीरियस ना हो, छोटे मोटे. Serious offences and heinous offences. Heinous means they are more serious, like the Delhi gang rape case. Juvenile justice boards constituted in every district to deal with children in conflict with law. That means who have committed the crime. The board comprises of metropolitan judge, JM, that is judicial magistrate, with 2 social workers, because at the end of the day society is getting affected, so 2 social workers. And since it is a justice system, so we require metropolitan judge and a judicial magistrate
to be the members of this board in every district, because every district has some children who may have done some or the other offense. So every district. So you see that at the very basic district level tak bhi this act is being implemented or working, excluding the offense of heinous crimes for all other cases. That means for the serious offense and petty offense. The juvenile will get institutional care for a maximum of 3 years by the board. That means by the institution it will be provided care and protection for maximum of 3 years. हीनियस क्राइम के लिए नहीं मिलेगी केयर, बिकॉज उसने कुछ ऐसा बहुत ही ग्रेवर ऑफेंस किया होगा. हीनियस मीन्स समथिंग विच कैन शेक द कॉन्साइंस ऑफ पीपल, जो एकदम लोगों को शॉक कर दे और हटा के रख दे कि अरे ये इतना ग्रेव कर सकता है, इतना नीचे भी कोई गिर सकता है. ठीक है. If a minor between age of 16 to 18 years is accused of committing a heinous crime, whether a crime is heinous or not is determined by a juvenile justice board on a case to case basis. That means it depends, of course. एक बंदे ने किसी मैटर में क्या किया है, that depends, right? हर केस अलग होता है. So on a case to case basis means every case is different, and what act a person may have done in a particular matter is different from the act which is done by another person in another case. ठीक है. तो हर केस में जो क्राइम किया गया है वो हीनियस है या नहीं, that will be different. किसी केस में होगा, किसी केस में नहीं होगा. So that is the basis. Then under the amended law, the minor can be tried as an adult. So if a child of or a minor of 16 to 18 years is committing a heinous crime, then even if he is a minor but he will be treated as an adult, and then as an adult उसका ट्रायल होगा, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स करी जाएंगी, एंड जो भी पनिशमेंट होगी वो भी एज एन अडल्ट उसे दी जाएगी. ठीक है. ही विल नॉट बी कंसिडर्ड, द एज विल नॉट बी कंसिडर्ड, एंड नाउ इफ़ ही इज ट्रीटेड एज एन अडल्ट दैट मीन्स उसको पनिशमेंट भी वही IPC के हिसाब से अडल्ट वाली मिलेगी. ठीक है. सो दिस चैप्टर इज़ ओवर हियर. थैंक यू.